Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to start a series of video lectures for undergraduate students in mathematics. And today's lecture is for 4th semester students. तो अगर हम 4th सेमेस्टर का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस देखेंगे, उसमें जो पहला टॉपिक है पहले यूनिट का, वो है डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स. तो इससे हमें पता चलता है कि हमें पहले ग्रुप की डेफिनेशन समझनी है. तो ग्रुप की डेफिनेशन समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन समझना होगा. तो इसलिए मैं बाइनरी ऑपरेशन की बेसिक डेफिनेशन लिखता हूं. ए बाइनरी ऑपरेशन स्टोर ऑन ए सेट ए. अगर आपके पास एक ऑपरेशन है स्टोर और एक सेट है ए, तो उस बाइनरी उस ऑपरेशन स्टोर को कब हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है ए पर? इफ दैट ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए, means Cartesian product A cross A to A, which is generally denoted by star of AB is equal to A star B. इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. We consider the set n of natural numbers. So this is the set of natural numbers containing counting numbers 1, 2, 3, 4, so on. At elementary level, you have heard about basic 4 fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication, and division. Let us select first addition. If we select only two natural numbers, say we select 2, or say we select 5, we select 2, and we add them, we get 5 plus 2, that is 7. So we select two natural numbers from the set n. In this case, we have set n. Instead of a, here it is n. We have set of natural numbers and we have an operation plus. Now we have to discuss whether this plus operation addition is a binary operation on the set n or not. Okay. Now if we select only two natural numbers, only two numbers from the set. Here it is natural set. We select 5, we select 2. We add them, we get 7. And 7 is also a natural number. Now if we select, say another set, say we have 3, we have 8, and 3 plus 8, that is 11. So 3 is a natural number that belongs to n, 8 is a natural number that belongs to n. So we select two natural numbers, two elements from the set, we add them, we operate them, and we get the outcome 11, and 11 is also a natural number. Even we can say that it is in general true that if we add, even you can check it. If we add only two naturals, if we select only two natural numbers, we operate them, we add them, we will get a natural. So in general, it is true that take only two naturals, add them, you get a natural. So in general, we can say that if A and B are only two natural numbers, then their sum, A plus B, is always a natural number. So this is always true. If you select only two naturals, you add them, you get a natural. Okay? Now consider the next basic operation, elementary level पे जो आपने सीखे है, that is subtraction. Minus. सेट तो सेम है, वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे हमने ऑपरेशन बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने सीखी थी, एडिशन लिया, हमने ऐड किया, दो नेचुरल्स को सिलेक्ट किया, वी ऐड देम, वी गेट अ नेचुरल. एंड इन जनरल इट इज ट्रू दैट sum of two naturals is a natural. Now let us try to apply the same condition here for subtraction, operation subtraction. Now you select the same natural, say 5, say 2. If we select two natural numbers, 5 and 2, here we add, here we subtract them. 5 minus 2, that is 3. And it is a natural number. Okay? Now the question is it always true that and here it looks like that we select 5, we select 2, we get two naturals. We select two naturals, we subtract them, we get a natural. But the question is, if you select the same number here, 3, next pair, 3, 8, and you subtract them, you get minus 5. Here it is a natural number, here it is not a natural number. Now the question is, what is the difference between the two operations on this set n of natural numbers? Here, you add the two numbers, 3 and 8, you get 11, and 11 is also a natural number. But here you subtract two naturals, 3 and 8, you get minus 5.
and that -5 is not a natural, and that is the basic difference between the two operations on the set n of natural numbers. So I think it is not always true. Even you can also check, it is not always true. Sometimes it may be true that you take two naturals. For example, if you take natural A, if you take natural B, and if A is greater than B, then A minus B is always a natural. But it is not always true. If A is equal to B, you take 5 and 5, 5 minus 5 is 0, not a natural. You take A less than B. You take 2, 7, 2 minus 7, not a natural. ठीक है? Now the question is, what is the difference between these two operations? Sum of two naturals is a natural. So you select two naturals, you operate them, you get the outcome which is back in the set. But if you take only two naturals, you subtract them, you will not obtain always a natural number. And this is the basic difference between these two operations. And this property, when we add, we always get a natural. This property is known as the binary operation. So what is a binary operation? Binary operation means, in simple words, if you select only two numbers from the set, you operate them, and whatever is the outcome, that should belong to the set. If it is always true, always, remember, then it is a binary operation. Now the question is, आप पूछोगे सर यहाँ पे भी subtraction, यहाँ हमने select किया 5, 2 and the answer is 3, it is a natural. Now the question is, यहाँ हमने select करा 3 and 8 and it is -5, but it is not a natural. Now the question is, students को confusion होता है कि सर अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे natural आ रहा है, यहाँ पे natural नहीं आ रहा है, अब हम इसको binary operation कहेंगे या ना कहेंगे? क्योंकि कहीं पे अप्लाई हो रहा है, कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा है. इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. Say you have two students, student A and student B. 12th का रिजल्ट आया तो दो स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट ए और दूसरा स्टूडेंट बी, दोनों एग्जाम में अपियर हुए थे. अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताऊं कि स्टूडेंट ए पास हुआ है, ही हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ठीक, स्टूडेंट ए जो था उसने एग्जाम पास किया और इसने पास नहीं किया, ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम. अगर 12th में से 4 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके लिए भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अच्छी तरह से समझना एग्जांपल. अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्यों हम यहां काउंटर एग्जांपल देते हैं, वहां नहीं दे रहे हैं. अगर स्टूडेंट ए पास हुआ तो 12th में टोटल 4 सब्जेक्ट थे. से देयर आर ओनली 4 पेपर्स इन 12th एग्जामिनेशन. कहीं पे 5 भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं. अगर स्टूडेंट ए पास हुआ तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसने सारे पेपर पास किए, ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछूं कि स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ, तो जब स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ तो उसका मायने क्या है? जरा सोचिए. क्या उसका मायने ये है? क्या ये मायने हो सकता है कि अगर हम कहेंगे स्टूडेंट ए पास हुआ, इसके सारे पेपर पास हुए, लेकिन अगर हम ये कहेंगे स्टूडेंट बी पास नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या ये है कि उसके सारे पेपर फेल हुए? सोचिए. तो आई थिंक सोच विचार के बाद आप इस बात पर एग्री होंगे, सर ये जरूरी नहीं है कि अगर स्टूडेंट बी फेल हुआ तो उसके सारे पेपर फेल है. क्योंकि अगर उसका एक ही पेपर फेल होगा तब भी वो फेल है, अगर 2 पेपर फेल है तब भी वो फेल है, अगर 3 पेपर फेल है तब भी वो फेल है, और अगर 4 पेपर फेल है तब भी वो फेल है. तो उसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट बी फेल हो रहा है, it means that he has failed in not exactly 1 paper, not exactly 2 paper, we don't know, not exactly 3 papers, not exactly 4 papers. The appropriate term is in at least 1 paper. उसका कम से कम एक पेपर फेल हुआ, ठीक है. समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, से बी ने फर्स्ट पेपर भी पास किया, थर्ड पेपर भी पास किया, फोर्थ पेपर भी पास किया. जो स्टूडेंट बी है उसका ओनली सेकंड पेपर फेल है. समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं. अब अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि भाई ए पास हो, उसका मायने क्या है? सर उसके सारे पेपर पास है. जेन्युइनली इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अब मैं अगर स्टूडेंट बी के मुतालिक आपसे पूछूं, कोई 2 स्टूडेंट्स हैं और राहिल एक स्टूडेंट है, या एक लड़का यहां पे बैठा है और बशीर दूसरा, या मुख्तार दूसरा स्टूडेंट यहां पे बैठा है. तो मैं राहिल से पूछता हूं, राहिल बी फेल हुआ तो उसका मायने क्या है? क्या अगर राहिल ये एक्सप्लेनेशन देगा कि सर बी इसलिए फेल हुआ
क्योंकि उसका पेपर 1 भी पास है, उसका पेपर 3rd भी पास है, उसका पेपर 4th भी पास है, लेकिन सर फेल हुआ। प्रॉब्लम है, एक इश्यू है। क्या इश्यू है? उसका पेपर 2nd फेल हुआ। तो मुझे लगता है ये भी समझने के लिए चलो ठीक ठाक है, इससे भी मकसद हासिल होता है कि भाई हाँ ये फेल हुआ, लेकिन उसने क्या कहा? पहले उसने कहा 3 पेपर जो पास हुए हैं, उसके बाद वो पेपर कहा जो फेल हुआ। अगर मैं मुख्तार से पूछूं, दूसरा लड़का यहां पे बैठा है, मुख्तार क्या लगता है आपको, बी फेल हुआ, कोई बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? सर यस, स्टूडेंट बी फेल हुआ क्योंकि उसका पेपर 2nd फेल हुआ। तो उसका मतलब क्या है? समझने वाली बात है। अगर स्टूडेंट बी फेल हो रहा है, वो किसी पेपर की वजह से फेल हो रहा है जो उसका फेल हुआ है, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही होगी कि हम कहेंगे स्टूडेंट बी फेल हुआ है क्योंकि उसका पेपर 2nd फेल हुआ। तो उसका मतलब है जहां पे रिजल्ट फेल हो रहा है, वहां पे आपको पास पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही बताइए कि उसका कौन सा पेपर फेल है। अगर आप ये दिखा पाए तो दैट इज कॉल्ड द काउंटर एग्जाम्पल। यू आर सेइंग दैट ही हैज नॉट पास्ड द एग्जामिनेशंस बिकॉज ही फेल्ड इन पेपर 2nd। सो दैट इज द रीजन हियर। लेट्स कम टू द पॉइंट। या डायरेक्टली यहां पे हम दिखा सकते हैं, सबट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज हम काउंटर एग्जाम्पल देंगे। बिकॉज 3, 8 बिलोंग्स टू n, it means 3 and 8 are natural numbers, but 3 minus 8 is equal to -5 and does not belong to। चलो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त तक जो हमने वेरीफाई किया वो मैंने यहां पे लिख दिया। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन बट माइनस इज नॉट अ बाइनरी। पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पे ही काम करेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या लगता है कि अगर आप कहीं पे भी 2 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करोगे, से 5, यू सिलेक्ट 3 and 5 3s are 15, you multiply them। सर हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसी ऑपरेशन को आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है। तो 5 और 3 को जब हमने मल्टीपल किया तो वी गेट 15। से यू गेट मल्टीपल, सिलेक्ट नेचुरल 2, यू सिलेक्ट नेचुरल 7, यू मल्टीपल देम, यू गेट 14। सो 14 इज ऑल्सो ए नेचुरल। आई थिंक इट इज ऑलवेज ट्रू। आपको क्या लग रहा है? It is in general true that when we select only 2 naturals, we multiply them. We multiply them and we get a natural. In general true that if A and B are only 2 natural numbers, then their product A into B, or shortly A भी लिखते हैं, it is always a natural number. So I think it is now clear. आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर सिलेक्ट कीजिए, you multiply them, you will always get a natural. सो बाइनरी ऑपरेशन का माने शॉर्टली इतना ही है। अगर हम इस सेट से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करें, फिर उनको ऑपरेट करें, पहले ऑपरेशन एग्जिस्ट होना है, ठीक है। इट शुड बी डिफाइंड, ऑपरेशन शुड बी डिफाइंड, एंड लेटर ऑन द आउटकम, द नेक्स्ट पॉइंट इज, पहले ये डिफाइंड होना चाहिए, ए स्टार बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस, पहले डिफाइन होना चाहिए, और उसके बाद जो आउटकम आएगा वो उसी सेट में होना चाहिए, ठीक है। So it is now clear that this multiplication is also a binary operation. So third point is here, multiplication is a binary operation on n. Now the fourth elementary operation is division. Divide. So आपको देखना है कि डिवाइड जो है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहला क्वेश्चन, क्या हम अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करें, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? यस, वी कैन ऑलवेज डिवाइड एनी 2 नेचुरल्स। सो इतना ही काफी नहीं है कि हम डिवाइड कर सकते हैं, बस ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, नहीं। पहले बाइनरी हम डिवाइड कर सकते हैं, यस, इसका आंसर यस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या जो आउटकम आ रहा है वो ऑलवेज उसी सेट में है, ये देखना है। क्या लगता है आपको, अगर आप डिवाइड करेंगे कि 2 नेचुरल नंबर्स का, क्या वो आउटकम डिवीजन ऑलवेज ए नेचुरल नंबर होगा? नहीं। अगर आप कहेंगे सर अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, तो 3 आएगा, वो तो नेचुरल है, ठीक। लेकिन क्या अगर हम नेचुरल 3 करेंगे सिलेक्ट और नेचुरल 5 करेंगे सिलेक्ट, ठीक। सो 3 and 5 are 2 naturals and you divide them, 3 divided by 5 which is equal to 3 by 5, not a natural number। क्या लगता है? मुझे लगता है ये काफी है कि वी कैन से दैट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सो डिवीजन इज, सो द फोर्थ पॉइंट इज डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है।
अब हमने दूसरा सेट लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। यही बेसिक ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहां पे भी डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ठीक, सो एडिशन प्लस, if you take any two naturals, say 3, say -7, sorry integers, ध्यान देना क्योंकि यहां पे सेट है z, जो सेट है उसी में से सिलेक्ट करना। उस पहले एग्जांपल में हम -7 सिलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि -7 सेट में नहीं था, नेचुरल नंबर्स में नहीं था, लेकिन यहां पे -7 है इसलिए हम 3 और -7 सिलेक्ट करेंगे। वी एड देम, यू गेट 3 + -7 एंड दैट इज 3 - 7 विच इज इक्वल टू -4। अब हमें देखना है कि -4 सेट में है। अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये नहीं कहना है कि सर ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इस वक्त हम नेचुरल सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हियर द सेट इज इंटीजर्स एंड -4 इज एन इंटीजर, सो इट बिलोंग्स टू Z. So I think you can directly say that if A and B are only two integers, add them A plus B, it is always an integer. So I think the set Z of integers, set Z of integers 0 plus -1 plus -2 so on. Now it is clear that addition plus is a binary operation. Is a binary operation on Z. चलो भाई हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सबट्रैक्शन देखेंगे। इससे पहले वाली जो बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम यहां पे कोई भी दो इंटीजर सिलेक्ट करेंगे फिर उनको सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आउटकम हमेशा इंटीजर होगा? हम एग्जाम्पल से भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। से यू टेक 3, यू टेक 7, we subtract them 3 - 7, या कोई और एग्जांपल देंगे, you take 3, you take say 8, you subtract them 3 - 8 and 3 - 8 is -5 and -5 is also an integer. Remember यहां आपको देखना है कि वो सेट में है, आपके सामने जो सेट है इसको वो है Z. You are verifying whether subtraction is a binary operation on Z. So आपको ऑलवेज आउटकम चेक करना है कि वो Z में है, आपका जो सेट है उसी में है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है -5। तो इसी तरह अगर हम एक इंटीजर लेंगे 7 और दूसरा इंटीजर लेंगे -3, ठीक है, तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस इंटू -3, तो ये बनेगा 7 + 3 माइनस प्लस, दैट इज 10 एंड 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या लग रहा है आपको? सो आई थिंक यू कैन वेरीफाई इवन इट। इफ यू टेक एनी टू इंटीजर्स, you add them, sorry, you subtract them, you will always get an integer. So in general we can say this is true that if we take any two integers a, b in Z, we subtract them a minus b and it is also in Z. So I think it is now clear that subtraction is also a binary operation on Z. Before going ahead, we have to see what we have proved till date. Here subtraction is not a binary operation. Here subtraction is a binary operation. इसका मायने क्या है कि जब हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अब हम ऐसा तो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कोई हमें पूछे कि सबट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, हम कहेंगे नहीं है, नहीं, ऐसे जवाब थोड़ी दे सकते हैं। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि सबट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, पहले हमें देखना है कि सेट कौन सा है। तो सेम ऑपरेशन सबट्रैक्शन, वही सेम ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर Z पे बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यही सबट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि एक ऑपरेशन एक सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है और दूसरे पे नहीं हो सकता। An operation may be a binary operation on one set, but may not be a binary operation on another set. अब अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे, थर्ड ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन। जिस तरह हमने वेरीफाई किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे कि वी प्रोडक्ट एनी टू नेचुरल्स वी गेट अ नेचुरल, इन जनरल इन अ सिमिलर वे वी कैन से दैट if we multiply any two integers we get an integer. Say we select 3, we select 8, so we product them, we get 24, it is also natural. We select -7, we select 2 and that -14,
and that is also an integer. Here it belongs to Zar, here it belongs to Zar. So in general it is true, if A and B are only two integers, and then their product AB is always an integer. आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो. So I think it is now clear that if you have two integers, you can multiply them and always the multiplication exists. It is defined, and even कोई आपसे कहे कि भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है. You multiply 7 by 0, you get 0, and 0 is also an integer. So कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? So the question is, now it is clear that subtraction, addition is a binary operation on Z. Z means integers, set of integers. Subtraction is a binary operation on Z, and multiplication is also a binary operation on Z. So multiplication is also a binary operation on Z. Now the next operation is division. Fourth one is division. आपको क्या लग रहा है कि अगर हम दो इंटीजर सिलेक्ट करें और फिर उनको डिवाइड करें, क्या ऑलवेज एक इंटीजर ही आएगा? आपको लग रहा है कि सर कहीं पे आएगा, वो मैंने इससे पहले भी समझाया कि हाँ, आप 6 सिलेक्ट करोगे, आप 2 सिलेक्ट करोगे, एंड यू डिवाइड देम, यू गेट इंटीजर. बट अगर आप 7 सिलेक्ट करोगे, इफ यू सिलेक्ट 2 integers 7 and 3, then 7 by 3 or 3 by 7, they are not integers. तो हम ये कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज 3, 7 they belongs to Z, and here 3 by 7, their division 3 by 7 is not an integer, implies division is not a binary operation on Z. इसी तरह अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर सिलेक्ट करेंगे, set of all numbers of the form p by q, pq integers and q non-zero. चलो भाई, अब हमें लग रहा है कि आप now you are in a position to say directly that which of the basic operations, elementary operation as or binary operation on the set q of rational numbers. ठीक है, अगर हम पहले वही एडिशन की बात करें, क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है क्यों पे? सम ऑफ टू रैशनल्स इज ऑलवेज अ रैशनल. सो इफ यू टेक एनी टू रैशनल्स, ये नहीं कि आप एक रैशनल सिलेक्ट करोगे और दूसरा इरेशनल सिलेक्ट करोगे, नहीं, उसी सेट में से आपको दो नंबर सिलेक्ट कर. सो इफ यू टेक एनी टू रैशनल्स, ए रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, देन यू विल से दैट यस देयर सम इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर ए है से पी बाई क्यू और बी है से आर बाई एस, देन देयर सम A plus B, you can verify that is P by Q plus R by S, that is PS plus RQ divided by QS. आपको क्या लग रहा है? ये P, Q, R, S, they are all integers, and Q and S are non-zero because they are rationals. Denominator is non-zero. So here QS, product of two integers, non-zero numbers is always a non-zero. So here it is non-zero and integer. ठीक है? Here it is an integer, so it is an integer by integer, so it is a rational number. So I think in general it is true that even I have verified it. ठीक है? I have verified that we select two rationals, we add them, we get a rational. So I can say that A plus B belongs to Q for all A comma B belongs to Q. So it means that plus is a binary operation. So Q की हम बात करेंगे, plus is a binary operation on Q. Similarly, you can show that. Second example, subtraction की बात हम करेंगे. इसी तरह जिस तरह मैंने अभी वेरीफाई किया, अगर हम ए लेंगे पी बाई क्यू, बी लेंगे आर बाई एस, देन यू सब्ट्रैक्ट देम, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यू गेट अ रैशनल नंबर. सो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल्स इज ऑलवेज अ रैशनल. सो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली, सो सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सो वी कैन से दैट a minus b belongs to q for all a comma b belongs to q. And the third one is multiplication. Still we can say that AB belongs to Q for all A comma B belongs to Q. ठीक है? So I think now it is clear that set of rational numbers, on the set of rational numbers, addition, usual addition, subtraction and multiplication, they are binary operations on Q. Now the next question is, what about division, fourth? आपको क्या लग रहा है? If you divide any two rationals, you get a rational. आप आराम से सोच लो, ठीक है? क्या लग रहा है आपको? अगर दो रैशनल नंबर्स होंगे, से A and B, they are two rationals. Means A is of the form P by Q and B is also of the form P by Q. So they are two rationals. Now if we divide them, A division B, you get A by B.
अब किसी को लग रहा है सर ये तो ठीक है, ए बाई बी, ये भी अब पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, ये भी एक रैशनल है, लेकिन इश्यू है, कहां पे इश्यू है? अगर ये बी जीरो होगा, यहां पे इश्यू नहीं था, अगर आपने यहां पे एडिशन में बी जीरो लिया, ए प्लस जीरो ए आ गया, वो रैशनल है। सबट्रैक्शन में बी जीरो लिया, ए माइनस जीरो ए आएगा, रैशनल है। लेकिन यहां पे इश्यू आ रहा है, अगर आप बी जीरो, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो रैशनल, बिकॉज जो सेट क्यों है सम ना, यहां पे जो क्यों है इसमें जीरो भी बिलोंग कर रहा है, इसमें थ्री भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि वेदर इट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट ओनली पेयर. If we select, say, A is equal to 3 and B is equal to 0. Now what about A by B? Then A by B, 3 by 0. It is not defined. So we can say that the division does not exist. ठीक? Or in other words, it does not belong to this set Q. So I think the only problem, otherwise, if A and B are non-zero, that is also a point. If A and B are non-zero, if A and B are non-zero rationals, then A by B is always a rational. Remember, is always a rational. आपको क्या लग रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम दो नॉन जीरो रैशनल सेलेक्ट करेंगे, नॉन जीरो रैशनल्स, ठीक है, या इवन अगर ए जीरो भी होगा, मैं अगर ए जीरो बी नॉन जीरो होना चाहिए, सॉरी, अगर ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स हो, वहां पे बी नॉन जीरो होना चाहिए, देन द डिवीजन ए बाई बी इज ऑलवेज अ रैशनल. सो इश्यू कहां आ रहा है? इश्यू जीरो से आ रहा है. अगर हम उस जीरो से डिवाइड करें तब ये रैशनल नहीं होगा. ठीक है. अब अगर मैं कहूं कि वेयर इट फेल्स, ये डिवीजन है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, आई थिंक योर आंसर शुड बी नो. व्हाई नो? बिकॉज कहीं पे पास हो रहा है. अगर हम लेंगे 3 and 5, 3 by 5 is a rational. 1 by 2, 7 by 3, 1 by 2 divided by 7 by 3, it is also a rational. ठीक है. लेकिन एक जगह पे ये फेल हो रहा है. ठीक है. अगर हम A लेंगे 3 and B लेंगे 0 and 3 by 0 is not a rational. तो it means that we can say that division is not a binary operation. We can say that division is not a binary operation. Division is not a binary operation on Q. Because 3 comma 0 belongs to Q. 3 and Q are rational numbers, but 3 by 0, when we divide them, it does not belong to Q. Either it does not exist or we can say that it does not belong to Q. ठीक है. तो it means that division is not a binary operation on Q. one point we have to make clear here. आपको क्या लग रहा है? अगर जीरो से ही प्रॉब्लम आ रही है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे, जीरो ही अगर रैशनल नंबर है, सॉरी जीरो तो रैशनल नंबर है, सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. प्रॉब्लम आ रही है टोटली जीरो से. बाकी केसेस में, इससे पहले जो एग्जाम्पल, वहां पे बहुत सारे पेपर्स उसके फेल थे, बहुत से जगह वहां पे फेल हो रहा था. लेकिन अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें, इफ वी डिवाइड एनी टू रैशनल्स, वी विल गेट अ रैशनल प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, प्रोवाइडेड यू डोंट सिलेक्ट जीरो. सो आप समझिए, आराम से समझिए. अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से जीरो निकालेंगे बाहर, इफ यू रिमूव जीरो फ्रॉम रैशनल सेट, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम क्यू स्टार लेंगे, क्यू माइनस जीरो, आराम से समझना, अगर हम रैशनल नंबर्स में से जीरो बाहर निकालेंगे, तो जब बाहर निकालेंगे वो रैशनल सेट नहीं रहेगा. ठीक है. इसलिए वो हमने डिनोट किया क्यू स्टार से, मीन्स शॉर्टली वी कैन से दिस इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स. सो रैशनल्स पे डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. लेकिन अगर मैं नॉन जीरो रैशनल्स की बात करूं, क्यों मैंने क्यों जीरो बाहर निकाला? क्योंकि आई थिंक इट इज क्लियर दैट द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ जीरो. ठीक है. तो अगर हम जीरो को बाहर निकालेंगे तो नया सेट बन गया क्यू स्टार, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स. अब आप वेरीफाई कीजिए, क्या लगता है आपको कि अगर हम रैशनल सेट में से जीरो बाहर निकालेंगे, अब वहां पे रैशनल नहीं है, अब ये रैशनल नहीं रहेगा, अब ये अनदर सेट रह गया, दैट इज क्यू स्टार, एंड दैट क्यू स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स. अब देखिए, अब अगर हम कोई भी रैशनल नंबर, दो नंबर सिलेक्ट करेंगे इस क्यू स्टार में, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, तो क्वेश्चन इज, आप कंफ्यूज मत होइए. क्वेश्चन इज, if you take only two numbers from Q star, and Q star is set of now, इसमें जीरो तो नहीं है, then their division A by B is always a rational, non-zero rational, so it belongs to Q star. आप सोचना, आराम से सोचना. मुझे लगता है now it is clear that
on the set of rational numbers. Addition is a binary operation. Subtraction is a binary operation. Division is a binary. Sorry, multiplication is a binary operation, but division is not a binary. बेटा आपने 12th में पढ़ा मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक समझना। अगर मैं ये सेट लूंगा M, set of all A 2/3 matrices such that A is equal to Aij of order 2/3, where Aij they are real numbers. समझना। Now I consider a set which contains all matrices of order 2/3 over the set of real numbers are. It means that this set M contains all 2/3 matrices, ठीक है, इसमें 2/3 matrices है, वही matrices जो उनके 2 rows and 3 columns है, ठीक है, and the elements of the matrices are real numbers. Now the question is matrix addition, not usual addition, is matrix addition a binary operation on M? This is now M. This is not neither A nor P nor N nor Z वगैरह, ठीक है. Now it is M. M is here what? A set containing all matrices of order 2/3. Now the question is matrix addition a binary operation? Is a binary operation on M? Up two matrices are permissible for matrix addition provided they are of same order. Remember. So this M contains only those matrices which are of order 2/3. So if you select two matrices, say A, B, which are both in M, ठीक है, तो A plus B क्या बनेगा, ठीक है, so A is equal, so ऐसे हम लिख सकते हैं, then A भी होगा a matrix of order 2/3 and B be a matrix of order 2/3. Why? Because these A and B matrices are generally denoted by capital letters. That is the reason why I take it here capital A and capital B from M. If A is in M, means it is a matrix of order 2/3. If B is in M, means it is a matrix of order 2/3. Then there's sum A plus B exists. अगर आप matrix addition याद करोगे, matrix addition is permissible only if the two matrices are of same order. Here order is 2/3, here order is 2/3. So you can add the two matrices by adding corresponding elements, and the resultant matrix will be Aij plus Bij of order 2/3. So it is in general true if you take any two matrices of order 2/3. Take any two matrices of order 2/3, then their matrix addition, then their sum is always a matrix of order 2/3. So I think now it is clear that addition, matrix addition, is a binary operation on the set M which contains all 2/3 matrices. अगर मैं आपसे ये पूछूं, what about matrix multiplication? Set same है, M containing all 2/3 matrices. क्या matrix multiplication भी इस पे binary operation है? If I take two matrices Aij of order 2/3 and Bij of order 2/3, ठीक है, मैंने क्यों why I select the orders for both the matrices as 2/3? Because they are elements of M and M contains only those matrices which are of order 2/3. ठीक है? Now if you add them, you can always add them because this is of order 2/3, this is of order 2/3. Matrix addition is permissible. Now the question is, can you multiply them? A into B, matrix multiplication. यहाँ पे order 2/3, B का भी order 2/3. लेकिन याद, you can verify that, you can even check that. आपको भी याद होगा कि matrix multiplication is permissible only if matrix multiplication AB is permissible only if number of columns of A is equal to the number of rows of B. ठीक, तो ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा, पहले एग्जिस्ट होना है. मैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ऑपरेट द टू एलिमेंट्स. Then the second point is the outcome should be there in the set. But first of all, matrix multiplication is not permissible because here it is 2/3, here it is 2/3. यहाँ पे columns 3 है, यहाँ पे rows 2 है, so it is not, does not exist. So their matrix multiplication does not exist. So ये जब exist नहीं कर रहा है, ठीक है, तो it means that multiplication is also not, matrix multiplication is not a binary operation on the set M. ठीक है. अब हम कोई कहेगा सर ये जरूरी था कि अगर हम A का ऑर्डर है 2/3, B का ऑर्डर हम लेंगे, अगर A का ऑर्डर 2/3 है, चलो B का ऑर्डर हम लेंगे 3/5. क्या आप ऐसे ले सकते हो? कैन यू टेक?
then we can multiply them. Question is, you cannot take, because the set M contains only only those matrices whose order is 2 by 3. So A belongs to M, B does not belong to M. So you cannot say that now I can multiply, because the elements are not in the set. Okay? And so I think it is now clear that if you have any set containing all rectangle matrices, okay, matrices where number of columns is not equal to number of rows, okay, then in that case matrix multiplication does not exist. So matrix multiplication is not a binary operation on M, but matrix addition is. ठीक है? अब आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसा सेट मैट्रिसेस का कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें मैट्रिक्स एडिशन भी परमिसिबल हो, वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन. चलो अब अगर हम दूसरा सेट सिलेक्ट करेंगे, से वी सिलेक्ट अ सेट G. If this is the set of all matrices of order 3 by 3. See this example clearly. If you select all those matrices whose order is 3 by 3. Now, still I will ask the question, what about matrix addition? Is matrix addition a binary operation on G? Remember, G contains square matrix of order 3. So you can always add the matrices of same order. If you take two matrices A and B, A will be a square matrix of order 3, B will be a square matrix of order 3, you can add them, you get a matrix of order 3, and that also belongs to G. And similarly, if you take here two elements, A comma B, they are in G. Now what is A? A is a Aij matrix of order 2 by 3 by 3, and B is Bij of order 3 by 3. Now I think you can easily multiply them, because here number of columns in A is 3, number of rows in B is 3. So A by B exists. Matrix multiplication A by B is permissible, and you can multiply, and the result matrix AB will be of order 3 by 3. So it is now clear. If you have if you have a set containing all 2 by 3 matrices, then multiplication is not a binary operation on it. But if you select a square matrix, set of all square matrices of any order, then matrix addition and matrix multiplication is matrix addition and matrix multiplication are binary operations on M. If I say take M is equal to set of all A matrices of order M by N, where M is not equal to N, Aij belongs to R. Now if you select a set of all those matrices of order M by N, where M is not equal to N, means they are not square matrices. Then I think you can say then matrix addition is a binary operation on M, but matrix multiplication is not. जिस तरह हमने अभी एग्जांपल दी थी 2 by 3 you cannot multiply the matrix multiplication. But if you take G equal to set of all matrices of order square matrix of order N. Now if you select all square matrices of order N, now I think it is clear that matrix addition exists. Matrix addition, you can add two square matrices of order N, and the result will be a square matrix of order N, so it belongs to M, just G. Similarly, if you multiply two square matrices of order N, you get a matrix of order N. So if you have a set which contains square matrices of some particular order, then on that set matrix addition as well as matrix multiplication is a binary operation. Dear students, अब अगर हम basic definition binary operation की देखेंगे, that is star is a binary operation on a set A if it is a function from A cross A to A. Already we have discussed that addition is a binary operation on n set of natural numbers. Binary operation, we will revise the topic. Binary operation तब भी है, addition is a binary operation. It means that when we select only two elements, we add them, we get a natural. ठीक? उसका मतलब क्या है? जब आप एक pair select कर रहे हो, we select two elements. Can we say that in other words we are selecting an element from Cartesian product n cross n? Because if n is the set of natural numbers, then what is the Cartesian product? You can get Cartesian product 1 1 ordered pairs 1 1 1 2 1 3 so on 2 1 2 2 2 3 so on. So this n cross n, it contains all ordered pairs from n to n. Okay? So it means that when we say it is a binary operation,
means we select any two elements, we operate them, we get a natural. When we say we select two elements, can I say in other words, we select a pair of elements? And now if it is a pair of elements, instead of saying we select two elements 3 and 6 and then add, can I say that we select a pair, two elements, or we select a pair of elements 3, 6? But we know this pair 3, 6, it belongs to the Cartesian product n cross n. So it means when we say it is a binary operation, we select a two elements, we add them, we get an element. In other words, we can say that we select one pair from the Cartesian product n cross n. So we select either two natural numbers a or b, or we can say we select the ordered pair a comma b. Okay? So ordered pair a, then we operate them a into b or a plus b. You get a plus b, a natural number. So the result will be here like this. You select 1, 1, you add them, 1 plus 1 is 2. In other words, we can say ordered pair 1, 1 is connected with 2. 1, 2, you add them, 1 plus 2 is 3, 1, 2 is connected with 3, 1, 3 is connected with 4. This contains 2, 1 ordered pair, you add them, means you are adding, actually selecting two elements. You add them, you get a natural 2 plus 1, 3. So 2 plus 1 is connected with 3, 2 plus 2 is connected with 4, and 2 plus 3 is connected with 5, and so on. Can I say in general that this rule means any ordered pair AB is connected with A plus B is a function. Why function? Function के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. क्या अगर ये सेट दो लेंगे A and B, क्या ये जो रिलेशन वहां पे है, is it a function? No, it is not a function because 3 has no image. Is this relation a function? No, it is not a function because this 2 has two images. And the definition of function is every element of domain has a unique image in code. ठीक, लेकिन यहाँ पे भी है this relation is a function because 1 has image, 2 has image, 3 has image. ठीक है? So every element of first set domain has image, so it is a function. So in general we can say here it is also true. You select any pair A, B, you add them, you get A plus B, and A plus B is always a natural number. So and every pair of n cross n has a unique image in n. It means that this addition plus, it is a function from n cross n to n, and the function is given by plus of AB is equal to A plus B. हम ऐसा लिख सकते हैं, if simply we say it is a function of two variables f of x, y, we can write it as x plus y. So this is a function of two variables, f of x, y is x plus y. Likewise, we can mention here that star of AB is A star B. So when we select a pair, we operate them. Operation हमेशा बीच में रखते हैं, A star B. ठीक है? So if we say f of x, y is x plus y, आपको लग रहा है ये function है, तो ये भी इसी तरह का एक function है. Plus of AB is A plus B. So you select the pair, you add them, and every pair has a unique image in, means every pair has a unique image in n. So plus is a function from n cross n to n. So plus is a binary operation on it. In general, we can say if star it is a binary operation on the set A, it means that if you select any two elements from the set A, you operate them A star B, the answer, the outcome will be A star B in A. In other words, we can say that we select any pair from A cross A. We select any pair from A cross A, we operate them, we get the element back. So it means that star is a function from A cross A to A, so it is a binary operation.